बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 21.2 and ORDS 21.4 with database 12c release 2 in Windows 10 InshaAllah quickly. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 21.2 और ORDS 21.4 को डेटाबेस 12c रिलीज 2 के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से। सो फर्स्ट वी विल क्रिएट फोल्डर इन C ड्राइव विद द नेम 12c_r2 अंडरस्कोर 21.2। सबसे पहले हम C ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 12c_r2 अंडरस्कोर 21.2 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर मजीद दो फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम के। एंड अंडर दिस फोल्डर we further create two folders with the name DB and ORDS. Extract database 12c release 2. Extract करेंगे database 12c release 2 को। Extract ORDS 21.4 folder in ORDS folder which we have just created. So we do not need to copy and paste ORDS folder. अब हम ORDS 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। The downloadable link of ORDS 21.4 is available. However, we have already downloaded ORDS 21.4 का डाउनलोडेबल लिंक जो है वो मौजूद है, अलबत्ता हम उसको पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। एक्सट्रैक्ट एपेक्स 21.2 in 12c_r2 underscore 21.2 folder. So we do not need to copy and paste Apex folder. अब हम Apex 21.2 के फोल्डर को 12c_r2 अंडरस्कोर 21.2 के फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें एपेक्स के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना ना पड़े। The Java version which we are using is Java 8 update 211। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 update 211 है। Now run database setup with administrator rights। database का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। Now I do not wish to receive security updates, so I will uncheck this option and hit next button। में security updates नहीं लेना चाहता तो मैं इस ऑप्शन को अनचेक करूंगा और next का बटन दबाऊंगा। Now option will be create and configure a database। hit next button, option create and configure a database का रहेगा, next का बटन दबाएं। Now option will be desktop class। hit next button, option desktop class रहेगा, next का बटन दबाएं। Option will be use Windows built-in account। you can use other option as well। hit next button। यूज विंडोज बिल्ट-इन अकाउंट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट का बटन दबाएं। नाउ डिफाइन ऑरिकल बेस टिल DB फोल्डर व्हाइल हिटिंग ब्राउज बटन। अब हम ऑरिकल बेस बताएंगे DB के फोल्डर तक ब्राउज का बटन दबा के। Define global database name, password, confirm password from your choice। Uncheck create as container database option। hit next button। global database name देंगे, password देंगे, confirm password देंगे अपनी मर्जी से, और create as container database के ऑप्शन को अनचेक करेंगे और next का बटन दबाएंगे। Now hit install button
अब इंस्टॉल का बटन दबाएंगे। अनचेक पब्लिक नेटवर्क ऑप्शन, पब्लिक नेटवर्क के ऑप्शन को अनचेक कर दें। चेक प्राइवेट नेटवर्क ऑप्शन, प्राइवेट नेटवर्क के ऑप्शन पे चेक लगा दें। हिट अलाउ एक्सेस बटन, अलाउ एक्सेस का बटन दबाएं। Oracle database 12c release 2 has installed, hit close button। Oracle database 12c release 2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज का बटन दबा दें। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रीच वेयर एपेक्स फोल्डर इज अवेलेबल। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ एपेक्स का फोल्डर मौजूद है और वहाँ जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे। When we reach there, run this command। Now connect with sys/sysdba, कनेक्ट होंगे sys/sysdba से और चेक करेंगे sg मैक्सिमम साइज शो पैरामीटर sg की कमांड चला के। अगर वो 3000 MB से कम होगी तो हम उसको बढ़ाएंगे। Now we will check sg maximum size by running show parameter sg command। If it is less than 3000 MB, then we have to increase it। Now we will shut down database by running shut immediate command। अब हम database को बंद करेंगे shut immediate की कमांड चला के। Now we will start database by running startup command। अब हम database को start करेंगे startup की कमांड चला के। Now we will check sg maximum size again by running show parameter sg command in order to make sure that the changes we did is reflected or not। हम show parameter sg की कमांड चलाएंगे और sg maximum size दोबारा पता करेंगे ताकि ये तसल्ली कर लें कि जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है या नहीं। तो जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है। The changes we did as reflected। Now we will install apex by running this command। अब हम apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के। Oracle apex 21.2 है इंस्टॉल। Oracle apex 21.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Now we will run this command। अब हम ये कमांड चलाएंगे। User will be admin, यूजर एडमिन रहेगा। ईमेल और पासवर्ड अपनी मर्जी से दे दें। Provide email and password from your choice। Now we will run this command। अब हम ये कमांड चलाएंगे। Now we will run this command। अब हम ये कमांड चलाएंगे and provide password for apex listener and apex rest public user। पासवर्ड देंगे apex listener और apex rest public user को जो कि Oracle होगा छोटे वर्गों में। Password will be Oracle for both user in lower case। Now we will exit this command prompt। इस command prompt को बंद कर देंगे। ओपन न्यू कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स है। वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद एंड रीच वेयर ORDS फोल्डर इज अवेलेबल। एंड व्हेन वी रीच देयर रन दिस कमांड। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे। Now we will provide a configuration path where we want to configure ORDS। अब हम configuration का पता देंगे जहाँ पे हम ORDS को configure करना चाहते हैं। Enter। Now provide your port। If your port is 1521 then hit enter button। If your port is different then
डिफाइन योर पोर्ट एंड हिट एंटर बटन। अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें, अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो फिर आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं। एंटर। Now provide your set. Provide password and confirm password for ORDS public user. पासवर्ड और confirm password दे रहे हैं ORDS public user को। To find your port, come to Oracle ORDB 12 home 1 expanded। अपनी पोर्ट पता करने के लिए आप Oracle ORDB 12 home 1 में आए, इसको खोलें, नेट मैनेजर आए, इसको खोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम विल बी सिस, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम जो है वो सिस रहेगा। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दें सिस के लिए। एंटर। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर एपेक्स पब्लिक यूजर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दें एपेक्स पब्लिक यूजर को। एंटर। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर एपेक्स लिसनर एंड एपेक्स रेस्ट पब्लिक यूजर व्हिच विल बी ऑरिकल इन लोअर केस। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दें एपेक्स लिसनर और एपेक्स रेस्ट पब्लिक यूजर को, जो कि ऑरिकल होगा छोटे ग्रुपों में। एंटर। नाउ वी विल कॉपी इमेजेस फोल्डर फ्रॉम द Apex इंस्टॉलेशन फोल्डर। अब हम कॉपी करेंगे इमेजेस के फोल्डर को Apex के इंस्टॉलेशन फोल्डर में से और उसको चिस्पा करेंगे यहाँ पे एंड पेस्ट इट टू दिस पाथ। एंटर। Now we will provide a path to Apex static resource location till images folder। अब हम Apex static resource location को पता देंगे images के फोल्डर तक का। एंटर। एंटर। Now when Oracle REST data services initialize appear, we can access Oracle Apex 21.2। Do not close this command prompt because if it closed for any reason, we cannot access Oracle Apex 21.2. However, we can reopen it as well. अलबत्ता हम इसको दोबारा खोल सकते हैं। जब Oracle REST Data Services Initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 21.2 को इस्तेमाल कर सकेंगे। इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम Oracle Apex 21.2 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। Open command prompt with administrator rights and reach where ORDS folder is available। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर से, वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है और वहाँ जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे। एंड व्हेन वी रीच देयर रन दिस कमांड। Oracle Apex 21.2 and ORDS 21.4 with database 12c release 2 has installed in Windows 10. Oracle Apex 21.2 और ORDS 21.4 database 12c release 2 के साथ इंस्टॉल हो चुका है। One thing which I forget, I just run the script java jar ords.var, I skip install and then advance। मैंने सिर्फ java jar ords.var करके फाइल चला दी थी, इंस्टॉल एडवांस करके लिखना भूल गया था, जिसकी वजह से चंद स्टेप्स जो है वो रह गए थे।
लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट डज़ नॉट मैटर अ लॉट. इट इज़ फाइन एंड इट विल वर्क फाइन. ये सही है और ये सही काम करेगा. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.